Morning, everyone. Welcome back to our daily Hindu editorial analysis. We are with Alpa Sharma on India's largest online education platform, that is Gradeup. Sahi prep hai to life set hai. Good morning. So good to see you guys on time. Finally, we have started off with our morning 7 a.m. classes, and I'm glad that you guys got up and are on time. Yes, so Dipansh has a question. Dipansh wants to know what is sectarian. देखो, Dipansh, एक word, let me write this down for you. There is a word called a sect. Okay? A sect is like a section, a group, a smaller group of people. It's basically a subset. If you remember making syllogism Venn diagrams, the smaller group in a bigger group, the smaller groups are called sects. Now, for example, so if somebody is a Hindu, all of us are citizens of India, but if somebody is a Hindu or a Muslim or a Christian or a Sikh or maybe any other religion, these are sects of Indian nationals. They belong to different groups. These groups are sects. So if I use a person that belongs to a specific group, that person will be called a sectarian. He belongs to a specific sect, is a sectarian. I hope you understand this through this Venn diagram that I've made. Okay. All right. Good morning, everyone. Very good. Very good. Okay, so now let's see what's going to be our agenda of the day. We have very important articles, two very important articles coming up today. So today is 30th of August and we are going to take two articles as usual. What we do, हम एक दिन पुराना newspaper discuss करते हैं. But because कल Sunday था और Sunday को editorial नहीं आता, I have taken two articles from Saturday's newspaper. Okay, and out of the two articles that I've taken, one article is from the Hindu, the other article is from the Indian Express. Both the articles very interesting and very important, so we're going to discuss that in detail. And tomorrow हम आज के दो articles discuss कर लेंगे. Okay, that's going to be our agenda for the day. Okay. All right. So what are we going to do? हम start करेंगे quote of the day से. You are going to give me the quote of the day. ठीक है? Quote of the day के बाद हम 3 questions revise करेंगे. Last class के vocabulary में से जो vocab किया था last class में, we'll try to revise those 3 words from that class through one word substitution question. फिर 2 articles का complete detailed discussion. में से जितना vocabulary, phrasal verbs, idioms and phrases आता है, we're going to try to memorize them. Tomorrow we will revise it from this list of vocabulary, and in the end you will tell me the tone of the author in the end of each article, plus you have to write down the summary of each article in not more than one line under my video in the comment section, so that later on during the day when I get time I can check your comments and see the summary that you've written is correct or not. I will comment if there's a need for any restructuring in the summary, but if I think your summary is correct, I will stick to it. So this is going to be our agenda of the day. ठीक है. अब एक important announcement मुझे करनी है. फ्राइडे का आर्टिकल बेटा सैटरडे को डिस्कस हो गए थे. Oh no, सैटरडे को तो क्लास ही नहीं हुई थी. Yes, मीमांसा फिर वो skip हो जाएंगे. Yes, that's going to happen. Chale. So, an important announcement about a sale going on. So, this is the month end sale that we have right now. We have flat 50% off going on all our Gradeup Super programs. So, if you're targeting to enroll yourself for any of the courses, make sure you avail this discount at the earliest. So, ये reminder है आपके Big Bang sale का. And this is the list of our achievers. ये वो लोग हैं जो हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स रह चुके हैं और जिन्होंने अपने लिए अपने ड्रीम एलएलयू में एक सीट बुक कर ली है, अपने लिए एक सीट फाइनलाइज कर ली है. You can also be one of them. Make sure you get up early in the morning, come on time to the class, and just be regular with your preparation. You could also easily be one of these people.
अच्छा, एक वीकेंड बैच लॉन्च कर रहे हैं हम. आई एम आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द बैच. सैटरडेज एंड संडेज को होगा. सो ऑल दोस पीपल हु आर ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द वीकडेज, दिस बैच इज फॉर यू. सो मेक श्योर आप जल्दी एनरोल करो इसको, बिकॉज इस बैच की ऑलरेडी 2 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं, लास्ट सैटरडे और संडे. तो अगर आपको वीकेंड बैच चाहिए, दिस बैच इज फॉर यू. मेक श्योर यू डू इट एट द अर्लीस्ट. चलिए, आप सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखते हैं किसके पास है. अच्छा, जवाहरलाल नेहरू भी आ गए. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग, who's joined me late. अच्छा, कितने लोग आज, क्योंकि मुझे अब स्ट्रेंथ उतनी नहीं लग रही है जितनी स्ट्रेंथ मेरे, half of the people were after my life to make the class at morning 7 a.m. But I see only 25 people live right now, because usually the 10 a.m. class has roughly 100 people live. देखते हैं कि कितने लोग एड ऑन होते हैं इस टाइमिंग में. Okay. If people are doubting how far you can go, go far so that you can't cure them anymore. Yes, exactly. And never be overburdened by anyone else's doubt on you or any kind of self doubt that comes on you. Doubt का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए. If you've decided on something कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसमें जाना है, there should not be any place for any kind of doubt there. And if there are people doubting your capabilities, just don't listen to them. Just prove them wrong. Put in your hard work. Remember. Okay. Another quote by Priya. You're off to great places. Today is your day. Yes. Your mountain is waiting. Go set on your way. Beautiful quote, Priya. बहुत अच्छा quote है. So आपने आज start कर लिया है. Mountain आपके रास्ते में. Just go grab it. Just go climb it. Nothing, absolutely nothing can stop you from achieving that. Very good quote. All right, that's great. So now let's start off with our revision from yesterday's class. You have to tell me one word that's suitable for this definition. The definition is a person who advocates a theory, proposal, or a course of action. Is that nuanced, crystallized, affluent, or proponent? What should our answer here be? Good morning, everyone. बताइए आंसर क्या होगा. Mimansa, so you could solve reading comprehension from all the previous year CLAT papers, ALET papers, CAT papers, LSAT papers, GMAT papers. You could buy any book for these papers. The answer has to be proponent here. Yes, it has to be proponent. Affluent is anybody who is wealthy, who has a lot of money. Crystallizes किसी चीज को fix कर देना, strongly उसका base form कर देना is crystallized. Nuance is anyone who knows the minute details of something is nuanced. Next word, a person who receives a legacy. Is it championing, affirmative, legatee, or dilution? Easy word. Yes. What's our answer here? Let's see who knows the answer. What is it? Yes, the answer is C. Absolutely. Legatee. The legacy say bana legatee. A person who receives a legacy is a legatee. Championing, when you're advocating for something, when you're strongly supporting something, you're championing for it. Affirmative, yes, give your agreement for something, give your consent for something, give your support for something is your affirmation. Dilution, किसी भी चीज की क्वालिटी को कम कर देना या इफेक्टिवनेस को कम कर देना. मेडिसिन डाइल्यूट कर देंगे, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. That is dilution. Okay, so literally पानी मिला देना, किसी चीज में डाइल्यूट कर देना होता है. But then contextually it means when you are uh, reducing the effectivity of something. The last word for revision, one word for the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something. Grave, insight, praxis, unveil. What is it? This is a good word. You're welcome, Mimansa. I just hope I get as many people live as there were earlier, because right now there aren't as many people live. I still have 33 people only. अच्छा देखो, एक ना announcement कर देती हूँ after this question. Let's first look at the question and then I'll make an announcement. No, a little late only, which is okay.
Insight? Yes. No, it's not grave, it is insight. Grave is a close word though. Yes. But the answer is insight. Insight is basically जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है, अंदर से आपको पता है कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ये सही है, गलत है, that's your insight. Your deep understanding for something. Grave is very, very serious. A grave issue is a serious issue. Praxis is anything that is in practice. Contrary to the common belief, कोई चीज जब practice में होती है, that is praxis. Unveil is reveal for usually the first time. Veil cover करते कोई चीज को, unveil उसको हम reveal करते हैं, that is unveil. Okay? I hope you get all the words. चलो, I wanted to do an announcement. देखो बच्चों, YouTube की सारी कैलकुलेशन मेरी इस चीज पे डिपेंडेंट है कि मुझे मैक्सिमम व्यूज चाहिए मेरे वीडियो पे. सिंपल इज दैट. आई वांट यू गाइस to like the video. I want you guys to share the video. I want a lot of people to come online and interact with me and come live to my classes. ठीक है? अब I have changed the timing to 7 a.m. because most of you had your schools. I'm going to watch for 1 week. If the number of people who come live falls down, I'll have to go back to 10 a.m. session. Remember that. Okay? So make sure you tell everybody to just get up on time, come live, because I assumed you have your schools and that's why the 7 a.m. thing is happening. But then if you people are not getting up early in the morning and coming live, then it's not helping either you or I. Recorded session ही देखना है तो मैं 10 बजे session ले लेती हूँ, आप बाद में देख लेना recorded session. Make sense? So make sure you tell everybody to come on time and watch the session live. Live is what matters for your learning and for my teaching as well. Okay? Okay. All right. So now let's move on to the vocabulary from today's articles. आज के articles दोनों ही बहुत interesting है. Second article is super fun. बहुत मजा आएगा उसको पढ़ के. ठीक है? So let's look at the vocabulary for the day. एक बार समझते हैं एक एक करके words. The first one is spree. So if somebody is on a reading spree, that means वो बहुत सारी बुक पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, उसको कुछ नहीं रोक सकता. So a spree is any activity जहां कोई restraint नहीं, जहां कोई control नहीं, आप constant उस चीज को pursue करने में follow कर रहे हो. That is a spree. He went on a 6-month crime spree. मतलब 6 month तक उसने non-stop crime किया, उसको कोई भी चीज नहीं रोक पाया. That is a spree. Okay? Next one is augur. Augur is जब आप predict करते हो एक अच्छी, not usually अच्छी, it is usually a bad thing that might happen. That prediction, उसको ही prediction को ही हम portent बोलते हैं. That prediction is called an augur. The end of the Cold War seemed to augur well. That means the prediction is इसका end अच्छा हो सकता है. तो हम usually इसको good और bad के लिए भी use करते हैं, but mostly ये bad के लिए ही use किया जाता है. So predicting any good or bad thing that might happen is augur. Yes. Okay. Yes, of course, Aman. This is for both 22 and 23. Okay. Next word. Then we have collegium. A collegium is like a group of some people they have common interest and they're like-minded people. Usually collegium एक हम यूनिवर्सिटी में ग्रुप बना लिया जो like-minded people का है, या किसी गवर्नमेंट में ग्रुप बना लिया जो like-minded people का है, जिनका इंटरेस्ट एक सिमिलर चीज है, जिनका एरिया ऑफ वर्किंग एक सिमिलर चीज है, वो किसी चीज में डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं कॉमन आइडिया में, उसको हम कोलिजियम बोलते हैं. नो वन वांटेड टू मिस द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कोलिजियम ऑफ द ब्लैक वुमेन फिलोसोफर्स. सो यस, देखो ये कोलिजियम ऑफ ब्लैक वुमेन फिलोसोफर्स है. all of these were women, all of these were philosophers, all of these were black. They had a common ideology. Okay, so that is a collegium. हम बहुत frequently ये word use करते हैं. अभी हमने जब appointment of the high court judges की बात करी थी, right? Spree is continuous, आप बोल सकते हो. Yes. Prolong is a related word to spree, not exactly. Spree is कोई चीज रोक ही नहीं सकती आपको. That is a spree. Okay. All right. Next word we have
एलिवेशन, देखो एक एलिवेशन होता है जब मैंने मेक बिल्डिंग, अ ह्यूज बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग की हाइट को हम एलिवेशन बोलते हैं। वो आगे से कैसे कितनी ऊंची दिखती है, दैट इज कॉल्ड एन एलिवेशन। द अदर एलिवेशन इज कोई भी चीज जो और बढ़ती बढ़ती जा रही है, उसकी या तो पोजीशन बढ़ गई है, या उसकी रैंकिंग बढ़ गई है, या उसका नंबर इंक्रीज हो गया है, दैट इज एन एलिवेशन. I hope you understand both of it. Her sudden elevation to the cabinet, that means her rank increased and she entered the cabinet. So increment in anything could also be elevation. Next is efflux. Effluents क्या होते हैं? Let me write this down here. Effluents are waste material coming out of factories, right? Like smoke. उस moving out of effluents को हम efflux बोलते हैं. That movement is called efflux. So the flowing out of a substance or anything or any idea can also be efflux. The same active efflux of sodium from cytoplasm of the external medium. So basically the moving out of something. ठीक है? Releasing of something is efflux. आया सबको समझ में? Yes, Mimansa, correct. All right. It consists of the most four senior judges. Yes, that is the article about today. Exactly, Movies. That is the article. उसी article में आया है ये. चलिए आगे देखते हैं. Next slide. I hope you had taken a screenshot of the previous slide. Next is sidestep. Sidestep is when you जब आप side हट जाते हो ताकि आप किसी चीज से बच सको. You try to avoid something. उस चीज को avoid करने के लिए आप side हट जाते हो. That is taking a sidestep. He sidestepped a defender and crossed the wall. तो उसने जैसे ही side हुआ so that defender उसको attack नहीं कर सके and he crossed the wall. Trying to avoid something by moving to your side is a sidestep. नेक्स्ट इज बुलवॉक. बुलवॉक इज जब आप एक ऐसी मैकेनिज्म क्रिएट करते हो जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है. सो द वैक्सीनेशन इज अ बुलवॉक अगेंस्ट कोविड-19. ठीक है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. द साइंस आर नॉट रियली गुड. इफ यू गोइंग टू योर स्कूल, स्टे सेफ एवरीवन. वेयर डबल मास्क. थिंग्स do not look very good for the future. वैक्सीनेशन की एज हो गई है तो वैक्सीनेशन लगवा के ही स्कूल जाना. Okay. Next we have raison d'etre. This is a very commonly used legal term. It's a very commonly used foreign phrase. It has been asked in one of our previous year CLAT papers as well. Your reason for existence. आप क्यों exist करते हो? ये आपका raison d'etre है. Art is the artist's reason d'etre. मतलब artist के reason of for existence क्या है? उसका reason for existence है कि वो सिर्फ art बनाए. So reason d'etre का literal translation reason for existence. आप क्यों हो इस world में? What is your purpose? Your purpose is your reason d'etre. Okay? आया सबको समझ में? Yes, yes. Amrita, it will also be flow of ideas. Correct. Okay. So bookworm इसलिए because not everything is covered up in YouTube channels, obviously. Right? There has to be a difference. Okay. Next one. We have impasse. Impasse. देखो इसको मैं ब्रेक करके याद कराती हूँ. 100% याद होगा, कोई भी नहीं भूलेगा वर्ड. Impossible to pass is impasse. एक डेडलॉक जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हो, आप फंस गए हो, यू आर स्टक, यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो बियॉन्ड दिस मोमेंट इज impasse. यू आर स्टक is impasse. So impossible to pass से याद करना impasse. The current political impasse मतलब ये फंस गया, कोलिशन नहीं बन रही है गवर्नमेंट, कोई भी मेजोरिटी से जीत के नहीं आया, कोलिशन बनना नहीं चाह रही है, impasse हो गया पॉलिटिकल. ओके, सो impossible to pass से याद करना impasse. सबको याद हो जाएगा ये. Yes. Okay. चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड ऑफ दिस स्लाइड, रैप. तो एक तो देखो रैप होता है, जो रैप सॉन्ग्स होते हैं उससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हो. उस रैप सॉन्ग्स में क्या होता है, आप कॉन्स्टेंट धीरे 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 बोलते रहते हो. ओके, एंड इट इज यूजुअली a critical remark to something, usually not always. Another meaning for rap could be a sharp quick blow to something. So thud, that sound, this is a rap.
Okay, knocking constantly could also be rap. There was a confident rap at the door. Somebody was knocking constantly. That's a rap. Okay, आया सबको समझ में rap? इसका screenshot ले लिया सबने जल्दी से. Let's move to the last slide for today's article. The last slide is here. Emanating. Anything that comes out of something is emanating. So example देखो उससे समझ आएगा. Warmth emanated from the fireplace. मतलब fireplace से क्या बाहर आ रहा था? Warmth आ रही थी. Anything that is coming out of a source is emanating. Spreading is emanating. When I meet a saint, he emanates positive energy. ठीक है, positive energy comes out of him. The next word is inalienable. ये देखो ब्रेक करो वर्ड को. तो इन इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स. एलिनेबल इज एक चीज जिसको हम अकेला कर सकते हैं, हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं. बट इनएलिनेबल इज एनीथिंग दैट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, that cannot be taken away from its basic idea. So the shareholders have the inalienable right to dismiss directors. इसका मतलब ये shareholders के पास permanent right है, ये right उनसे कोई भी नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं ले सकता. is inalienable. तो alienable is ले सकते हैं, हटा सकते हैं, remove कर सकते हैं, but inalienable cannot be removed, cannot be taken away, cannot be isolated. Last word is olfactory. Anything that relates to smell is olfactory. Okay, that sense of smell is olfactory. The olfactory organs is anything that relates to smell. Simple as that. So I hope you get all the words out of today's articles. Can we now start discussing the articles, everyone? Yes, Vishnu, it can be emerged. Absolutely, it can be emerged. Okay, so let's start discussing the articles today. दोनों आर्टिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है. सेकंड आर्टिकल तो बहुत फन है, मजा आएगा आप सबको पढ़ के. आज का कैरी कैचर भी बहुत अच्छा है, वो भी देखेंगे. ठीक है. यस, आप मूवीज ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो. यस, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. चलो, हियर वी गो. तो 3 लेवल्स हमारे कंट्री में आप सबको पता है. ठीक है. आई हैव द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओके, और तीनों का काम क्या है? तीनों का काम है, सबसे पहले आता है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट डिसाइड करता है क्या अमेंडमेंट्स आने हमारे लॉ में, क्या नए लॉज बनने हैं. ठीक है. सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे मिलके ये डिसाइड करते हैं कि क्या नए लॉज बनने हैं. इन लॉज को एक्शन में लाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है, और ये इंश्योर करना कि वो लॉज फॉलो हो रहे हैं, ये जुडिशरी का काम होता है, जो जजमेंट्स देते हैं. ओके. अब इन तीनों में ऑब्वियसली ये तीनों इंडिपेंडेंट है, बट ये कोरिलेटेड भी है. एंड जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कांस्टेंट रिफ्ट हम देखते आए. सो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, they have witnessed a lot of petty fights, petty impasse यूजुअली इनमें देखा गया, क्योंकि ये जजेस हैं और ये हमेशा अपना rule, they will make sure that everything is rightly applicable and the power does not go away from their hands. On the other hand, if you look at the executive, the government will never let judiciary become supreme over itself. तो दोनों को अपने अपने बेनिफिट्स के लिए लड़ते हुए देखा गया हमने. बहुत बार हिस्ट्री में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स ऐसे देखे हमने जहां ये दोनों आपस में लड़ते हैं. और इसी वजह से जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, ठीक है, अभी करंटली हु अपॉइंट्स द जजेस? किसके हाथ में अपॉइंटमेंट, ये बताओ मुझे. हु नोज इट? Who has the power of appointing judges right now in our country? Let me see who knows it. Yes, the president. Absolutely, the president. अब बार बार ना इस पे बहुत सारी डिबेट्स भी हुई हैं कि क्या ये प्रेसिडेंट से ले लेना चाहिए राइट, या जुडिशरी के पास आ जाना चाहिए राइट, या एग्जीक्यूटिव के पास ही रहना चाहिए राइट. इट्स द प्रेसिडेंट. यस. So nonetheless, the fight has been constant. So this article precisely is about that.
And it's a nice article, it's a very good news because finally according to this article जो 9 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज बिकॉज ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो फाइट है उसकी सबसाइड होने की साइंस है. दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट. सो एक एक करके डिस्कस करते हैं लाइन. एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस चीज के बारे में एंड एज थिंग्स कम्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू. सो फिल टू द नाइन्स ऑन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट स्प्री था अपॉइंटमेंट का, एक के बाद एक 9 लोगों को अपॉइंट कर लो. तो ये तो स्प्री हुआ एक्चुअली. और ये यूजुअली तब है जब ये वैकेंसीज इतने टाइम से खाली थी, तब कुछ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और सडनली स्प्री आ गया कि 9 लोगों को एक साथ अपॉइंट कर लो. Okay, so it is not often that 9 judges are appointed to the Supreme Court at one go. बहुत ही rare ऐसा होता है. So it's actually a good news in a welcome sign of cooperation between judiciary and executive, जो कि बहुत rarely देखने को मिलता है. Judiciary and executive usually are at loggerheads with each other. But यहाँ it's a welcome sign. The President of India has signed warrants of appointment within days. The 5-member collegium recommending 8 High Court judges, including 3 women. देखो, so, एक कलीजियम है. कलीजियम बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि किन किन लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए, किन किन लोगों को हम जजेस बना सकते हैं एंड एक्स वाई जी. ठीक है, तो कलीजियम ने जिस दिन सजेस्ट किया कि ये 8 लोग हैं जिनको हम जजेस बना सकते हैं, और उसके विद इन अ फ्यू डेज ही प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया ये चीज. एंड दैट्स अ वेरी वेरी वेलकम नोट बिकॉज ये दिखाता है कि हमारे एग्जीक्यूटिव और हमारी जुडिशरी में अब कोऑर्डिनेशन हो गई है. थिंग्स आर मूविंग फास्ट. And the welcome note here is, देखो ये चीज, why is it necessary to write this in commas? जब ना 8 लोग अपॉइंट हो ही गए हैं जजेस, तो ये चीज कॉमर्स के बीच में लिखने की क्या नीड है? ये इसलिए है बिकॉज 3 वुमेन अगर आप अपॉइंट कर रहे हो जिसमें से कि एक हमारी सीजेआई भी बन सकती हैं, चांसेस आर रियली हाई. ये एक बहुत बहुत वेलकम साइन है एक हिट्रोजेनस मिक्सचर का, जहां हम बहुत इंक्लूसिव है अबाउट वुमेन एज वेल एंड अ लॉयर फॉर एलिवेशन. तो यस, 8 हाई कोर्ट जजेस हो गया और एक लॉयर का एलिवेशन हुआ. इट इज नियरली 2 years सिंस सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स वर मेड. तो 2 साल पहले हुआ था और एक साथ 9 अपॉइंटमेंट्स हो गए. एंड सम वैकेंसीज हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम. तो बहुत टाइम से वैकेंसीज थी, लेकिन इट्स अ वेरी वेलकम नोट दैट 9 लोगों को अपॉइंट कर लिया गया है. द लेटेस्ट राउंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स पॉसिबली सिग्निफाइज द ऑनसेट ऑफ एन एरा वेयर द 2 branches agree more and agree faster. तो yes, it's a very positive note. ऐसा लग रहा है ये जो 2 ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जिनमें रिफ्ट होती रहती थी लॉगर हेड्स से, ये अग्री करने लग गए एक दूसरे से और बहुत जल्दी अग्री करने लग गए कि विद इन डेज साइन कर दिया प्रेसिडेंट ने. इससे ज्यादा वेलकम नोट कुछ हो ही नहीं सकता. द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच goes up to 33 and in the court that has a sanctioned complete of 34 judges. तो ये जो बेंच है जो डिसाइड करता है जिनका प्रमोशन होना है, वो 33 जजेस का है अभी राइट नाउ. द प्रेजेंस ऑफ 3 वुमेन एंड द फैक्ट दैट द डिफरेंट हाई कोर्ट्स आर गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इज अ पॉजिटिव फीचर. तो ये 2 चीजें हैं which are positive. One is the appointment of women and the second is different high courts are getting recommendations and augur well for increasing diversity of the bench. Yes, डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होगी? जब आप अलग अलग हाई कोर्ट्स के लोग लेके आएंगे या फिर आप विमेन भी को भी इंक्लूसिव करेंगे. इन पर्टिकुलर जस्टिस बीवी नागराज एलिवेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम means that she may become the first CJI of India. So ये भी एक बहुत welcome note है. As I had already said, one of these 3 women who are elevated, one of these 3 can also become our next CJI. So okay, so here it is. The trend of appointing members of the bar directly to the Supreme Court continues with the honor going this time for the former Additional Solicitor General P.S. Narasimha, who is also line to be the Chief Justice by the efflux of time. This is only an informative line. इसको हम skip कर सकते हैं. A notable candidate whose name does not figure. ठीक है, अब यहाँ एक point है जो important discuss करने वाला है. A notable candidate जिनके लिए ये एक्सपेक्ट किया गया था बिकॉज उनका जो रैंकिंग है वो हाई है, उनका एलिवेशन हो सकता है. दैट इज अकील कुरैशी, चीफ जस्टिस ऑफ द त्रिपुरा हाई कोर्ट, हु इज फेयरली हाई इन ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस. तो वो काफी हाई है रैंकिंग में, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है. That the finalization of the recommendation came about after the retirement of the Justice Rohinton Nariman and a change in the composition of the collegium with it. So, जैसे ही रोहिंटन नरीमन ने रिजाइन किया, जो कॉम्पोजिशन था हमारे कलीजियम का वो बदल गया ऑफ कोर्स. और उसके बदलने के बाद
इनका नाम नहीं आया उस लिस्ट ऑफ एलिवेशन में. दिस may indicate that the names were the outcome of a compromise. कि चलो ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते क्योंकि इसका पूरा डायनामिक बदल गया कलीजियम का. Let's make a compromise here. It is not idle speculation to say that Justice Qureshi's candidature may have been behind stagnation in the appointment process for a long time. तो बहुत टाइम से ड्यू था उनका प्रमोशन, बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है अखिल कुरैशी के साथ. 2 years ago, a proposal by the collegium to name Justice Qureshi as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court was recalled. और उनको फाइनली कहां भेजा? उनको त्रिपुरा हाई कोर्ट भेज दिया गया. ठीक है. सो देयर मे बी समथिंग हिडन behind that. What could be that? In the larger scheme of things, the omission of individuals may not matter much, but it must not become a practice to sidestep suitable candidates. अखिल कुरैशी की बात हो रही है यहाँ कि कैसे उनको अपॉइंट नहीं किया गया, लिस्ट में उनका नाम नहीं है. सो it doesn't matter a lot all right now, but it should not become a habit कि आप suitable candidates को recognition नहीं दे रहे हो without having a valid reason. And after all, the opaque collegium system is sustained only by the belief that it is a bulwark against executive intervention. Of course, देखो executive इतना intervene नहीं करे जुडिशरी में, इसीलिए ही ये collegium बनाया गया ताकि ये collegium protect कर सके जुडिशरी को executive के intervention से. The reasonatory of the collegium, the reason of existence of the collegium should not be lost sight of. उनका existence का reason क्या है? ये protect करना judiciary को executive के intervention से. Going forward, one should wish for fewer spells of impasse in judicial appointments. तो आज के बाद अगर हम future देखते हैं, there should not be any kind of rift that the appointments are stuck at some point. अपॉइंटमेंट्स होते रहने चाहिए, इम्पास कम से कम हो, ऐसा दिखना चाहिए फ्यूचर में. वी आर होपफुल अबाउट दैट. Quicker processing of names like happening right now, and greater consideration to social and regional representation. अलग अलग हाई कोर्ट से लोग आए, हर जेंडर से लोग आए, ये इंक्लूसिविटी भी आगे देखने को मिलेगी. वी आर होपफुल अबाउट दैट. व्हाट इज द टोन हियर? बताइए, व्हाट इज द टोन? कौन बताएगा टोन? Yes. Who is going to tell me the tone here? Let's see how many of you have understood it. Speculate का मतलब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में सोचना. Speculating. Praiseworthy? Yes. Praiseworthy, optimistic. Last two lines are very optimistic. In fact, a lot of things are optimistic here. Yes, I'll agree to optimistic. Praiseworthy, optimistic है तो hopeful भी हो जाएगा. By 24 or 25, even I'm not sure because I'm not a lawyer, but nonetheless we can check it. Okay, even I'm not sure of 24 or 25. Yes, so optimistic, very hopeful, and very positive about the future. All right, chalo. So let's move on to the next article, second article. Super fun to read. देखते कितने लोग को समझ में आता है आर्टिकल. ठीक है? So here we go. If you're targeting CLAT 2023, we have a new batch for you. I'm going to be a part of that batch as well. Make sure you enroll yourself at the earliest. Speak to our counselors on this number and know more about the program. चलो, अब मैं आपको explain करती हूँ what the second article is about. ठीक है? Indian culture में, India में, is there something that comes to your mind when I use the phrase a very, very strong but pleasing smell, which is originally attributed to Indians? Can you name a very, very strong but pleasing smell जो usually Indian culture के साथ हम link कर सकते हैं? Let's see this.
क्या आता है आपके दिमाग में? यू विल हैव फन रीडिंग दिस आर्टिकल. ये सब छोड़ो, आप मुझे स्मेल के बारे में बताओ. ये कल चेक करके देख लेंगे 24 है कि 25. हम्म. बताइए. 24, 25 बाद में करना. नेम करो स्मेल. एक ऐसा स्मेल नेम करिए जो बहुत स्ट्रांग है लेकिन हम इंडियंस को अच्छी लगती है, जो हम इंडियन कल्चर से लिंक करते हैं. देसी घी का तड़का इन दाल. गुड गुड, वेरी गुड. स्पाइस. इत्र. यस. करी का स्मेल. ओके. स्टोन का स्मेल. सॉरी. ओके. और कोई? तड़का. यस. करी. यस. ओके. तो दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट. ठीक है. हाँ, that the smell is very good, Abhishek, but it does not necessarily relate to our Indian culture. फिश का स्मेल. यस. बंगाल में. एब्सोल्युटली. तो यस, आई थिंक यू, और सैंडलवुड में भी. तो आपने बहुत सारी चीजों को लिंक कर लिया है. सो दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट. चलो देखो कि क्या बोल रहा है. आप लोगों ने वेजिमाइट सुना है? किसी ने नेम? ईस्ट. YEAST. ठीक है. ईस्ट जब यूज करते हैं ब्रूरीज में अल्कोहल ब्रू करने के लिए, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है वेजिमाइट. किसी ने वेजिमाइट टेस्ट किया कभी? इट इज सो बैड. इट इज सो बैड फॉर अस कि आप उसको झेल नहीं सकते हो. इट्स रियली रियली बैड स्मेलिंग थिंग, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डेलिकेसी इन ऑस्ट्रेलिया, जहां वो टोस्ट के ऊपर उसको स्मियर करते हैं, फिर थोड़ा बटर लगाते हैं, एंड दे रेलिश इट. बट वो इतना पंजेंट स्मेल है कि अगर हम हम जिस बेल्ट में रहते हैं, जो इंडियंस हैं, अगर आपने किसी भी इंडियन से पूछा होगा जिसने वेजिमाइट टेस्ट किया होगा कि व्हाट इज द वर्स्ट थिंग यू टेस्टेड इन योर लाइफ, दे वुड यूजुअली मेंशन वेजिमाइट. ओके. सो दैट इज व्हाट दिस वेजिमाइट इज. अब वेजिमाइट को एक नेशनल स्टेटस दे दिया गया. उसको सिटी के हेरिटेज से लिंक कर दिया गया कि ये उनका खुद का और उनके लिए बहुत पॉपुलर है. हर कोई इसको टॉलरेट नहीं कर सकता. So let's see what is this article is about. Following Melbourne's lead, India could also recognize aromas unique to our culture. अभी कुछ एग्जांपल्स आपने दिए. तो जैसे मेलबर्न ने रिकॉग्नाइज किया है वेजिमाइट को as an aroma that is unique to their own culture, we Indians could also do that. It's the right time to do it. Strong smells don't always deserve bad rap like they get. It could be good as well. Take Vegemite's example. ठीक है. Strong smell है लेकिन bad rap नहीं है. It's a good rap actually. Australia's favorite pet, with a punchy, unmistakable aroma. एक ऐसा अरोमा है जो आप मिस ही नहीं कर सकते हो. सब लोग पहचानेंगे वो अरोमा. That brings tears to some eyes. इतना strong that it may actually bring tears to your eyes. So deep is the Australian love for Vegemite that Melbourne has decided to list the smell emanating from its factory. Actually, वो ऐसा smell है जो constant. अच्छा, यूपी जितने लोग रहते हैं, ठीक है, धामपुर के पास से निकलोगे तो जो स्मेल आएगा, क्या वो अच्छा लगता है हमको? क्या होता है वहां? क्या बनता है वहां? आप शुगर केन से शुगर क्रिएट करते हैं. इट इज सच अ बैडली स्मेलिंग प्लेस, बट जो लोग वहां काम करते हैं, इट्स अरोमा फॉर देम. Right? That is exactly how Vegemite is. Factory where it is made as a part of city's heritage. The rest of the world, including India, should take a note. हमें भी recognize करनी चाहिए हमारे कंट्री में ऐसी कुछ चीजें जो हमारे कंट्री के लिए यूनिक है in terms of its aroma and smell. Okay.
The Melbourne City Council's decision to is remarkable not only because the smell has been recognized as having heritage value, but because it is not one that is universally loved. तो सिर्फ अरोमा देखो हम सैंडलवुड का अरोमा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन इसमें यूनिक क्या है? ऐसा कोई चीज नहीं है जो किसी को पसंद नहीं है। सैंडलवुड सबको पसंद आएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, नोबडी इज गोइंग टू हेट इट। बट वेजिमाइट के हेटर्स बहुत सारे हैं। हमारी कंट्री में ऐसा क्या है जिसके हेटर्स बहुत सारे हैं? इस आर्टिकल में आगे दिया हुआ है, लेट्स सी। आई एम गोइंग टू टेल यू किस चीज के बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Those who have grown up with a pot of Vegemite sitting on the breakfast table may adore its savory fragrance. तो जिनके घर में रेगुलर है ये चीज, they will love it. उनके लिए it's a beauty, Vegemite का smell. Okay. But those who haven't grown up with it usually can't stand it. 99% of the Indians, they will not be able to stand the smell. हम taste ही नहीं कर पाएंगे. This puts the recognition in quite a different league from, say, the 2000 UNESCO Intangible Heritage label granted to the art of perfumery in Grasse. तो देखो, परफ्यूम, स्मेल्स, इत्र जो आपने एग्जांपल दिया था, सैंडलवुड जो आपने एग्जांपल दिया था, ये डिफरेंट है। देखो, इनको इंटेंजिबल हेरिटेज हम मान सकते हैं। इत्र जैसे हमारे कंट्री ओरिजिनेशन तो नहीं है, बट हम लिंक कर सकते हैं हमारे कंट्री को उसके साथ। वैसे ही फ्रेंच रीजन में ग्रासे को उन्होंने एक रिकॉग्निशन दिया था यूनेस्को के थ्रू, लेकिन वो डिफरेंट हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एनीबडी वुड हेट। It will assign value to unique aroma instantly recognizable to a certain culture and loved by it, even if described as stinky by the rest of the world. बाकी वर्ल्ड बोलेगा हे भगवान क्या स्मेल है ये, बट वो कंट्री बोलेगा वी लव दिस स्मेल। ऐसी क्या चीज है? इंडिया मस्ट टेक अ नोट द पोटेंशियल इन दिस आइडिया। हम भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? चलो देखो, unmistakable aroma of drying bombil in inalienable parts of Mumbai's cultural landscape. Bombil fish dry हो रही है, ड्राइंग फिश की स्मेल बहुत पंजेंट होती है। जो फिश नहीं खाता वो उसको स्टैंड नहीं कर सकता, बहुत पंजेंट स्मेल होती है। बट इट्स एन inescapable part. What about the smell of ripe jackfruit in Kerala backyard? बहुत अच्छी स्मेल है वो एक्चुअली। जो राइप जैकफ्रूट खाता है, यूजुअली पीपल कैन स्टैंड दैट स्मेल, बट जिसने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में या सदर्न इंडियन पार्ट में राइप जैकफ्रूट खाया है, मैंने तो पेड़ से तोड़ के राइप जैकफ्रूट खाया है, तो मेरे लिए तो लव है राइप जैकफ्रूट। बट जिसने नहीं खाया, यू विल हेट दैट स्मेल। एज फॉर इट अप, हींग। हींग का तड़का जो हम लगाते हैं दाल में, उसको डेविल्स डंग बोला है। ठीक है, जो नहीं खाता हींग वाली दाल, he will call it devil's dung, but हमारे लिए हींग की दाल, especially Rajasthanis, it's love. Every day our dal is made with हींग। अच्छा, there are people who hate that smell। अच्छा, okay, all right. Yes, and Shweta, that is the beauty of eating the wrapped jackfruit. Yes. So, but we know how appetizing the dal smells when freshly tempered with this aroma. And how about the muscular smell of exon? Yes. What is it? It's a fermented soybean paste जो नागा cuisine में use होता है। I've tasted that as well. ठीक है, उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो फर्मेंटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। बट ये उनके घर में स्टेपल है, नागा cuisine में इट्स अ स्टेपल। So if anything, this country has an embarrassment of olfactory riches to choose from. कह रहे हमारे पास में एक वैरायटी है ऐसी चीजों की जो कि बिटर स्मेलिंग है पूरे वर्ल्ड के लिए, बट हमारे लिए इट्स लव एंड वी कैन चूज दैट फ्रॉम। सो इंडिया should take note from them, and India should also recognize something of their own as something hated by the rest of the world but loved by a lot of Indians. So, अच्छा, हींग, यू डोंट नॉट लाइक हींग। चलो अब मुझे टोन बताओ, तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर करती हूँ। यस फैजल, एवरी डे एट 7 AM, एवरी डे। ये क्लास कब तक चलेगी? ये क्लास यूजुअली 7 to 7:50 होती है। दिस इज यूजुअली a 50-minute क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, इट्स वेरी गुड अबिरल, इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। यस, अच्छा ये एग्जाम्पल भी देखो, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया। काउडंग केक्स बीइंग ड्राइड ऑन द वॉल फॉर अ विलेज होम इन गुजरात। भाई इसका स्मेल अच्छा नहीं होता।
How will cow dung cakes drying on walls in Gujarat and Rajasthan be good to smell? मुझे नहीं पता और इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए भैया, ये स्मेल अच्छा स्मेल नहीं है. So let's see what is the tone. रैप देखो, एक रैप होता है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म देना किसी को या कॉन्स्टेंटली हिट करना किसी को, दैट इज रैप. एक होता है कांस्टेंट नॉक 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 ये करना, दिस इज अनदर रैप. कटहल इज जैकफ्रूट. जैकफ्रूट हिंदी इज कटहल. ओके, चलिए टोन बताइए. यस, बहुत अच्छा आर्टिकल है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए. एग्जैक्टली. ऑल राइट, टोन क्या था, टोन बताइए. इंफॉर्मेटिव. ओके, और कोई. सजेस्टिव. यस, हाईली सजेस्टिव. वो कह रहा है इंडिया को भी इससे सीख लेना चाहिए. एनी अदर टोन. Comparative, yes. Funny, absolutely. Mostly suggestive, mostly suggestive. All right. तो आप एक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक लाइन में समरी दोनों आर्टिकल्स के लिखोगे. ठीक है, लाइक करो वीडियो अभी बिफोर यू लीव द क्लास एंड शेयर दिस वीडियो. I want maximum views on the video if you want the 7 a.m. class to continue. ठीक है, share this video in any groups that you have, in any telegram groups or any CLAT aspirants group. Share this video, that increases my reach and that aids me. Okay, all right. So ला कैरी कैचर भी अच्छा है. चलो जल्दी से कैरी कैचर देखते हैं. ये क्या है बताओ, क्या समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है सिनेरियो में. थैंक यू. Yes, Bengali also call it kathal. I have stayed in Assam for 15 years. मैंने असम में बहुत कटहल ब्रेक करके क्लाइम करके ट्री वहीं ओपन करके पेड़ के नीचे ही खाना. इट्स ब्यूटी. Hmm. The evacuation that's happening in Afghanistan, yes. और इस बीच ISI ब्लास्ट कर देता है. No, no, not only suggest, you forward share the video. Okay. सो यस, इंडियंस वापस आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं ये इवैक्यूएशन है, एयरपोर्ट का सीन है. इंडियंस वापस आ रहे हैं अफगानिस्तान से इंडिया में. देयर सेइंग, आपको पता है अफगानिस्तान पार्लियामेंट इंडिया ने बनाया था. आपको ये पता है राइट दैट इंडिया बिल्ड द, यस, $90 बिलियन लगा के पार्लियामेंट बनाया था इंडिया ने. और भी बहुत सारी चीजें, डैम्स बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं, कुछ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स रिपेयर करवाए हैं. तो ये बच्चा बोल रहा है कि इससे बेटर होता कि एक सेफ एयरपोर्ट बनवा देते क्योंकि वहां ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग वापस नहीं आ पा रहे इंडिया. तो ये एक्चुअली एक बहुत ही सार्केस्टिक अटैक है इंडिया पे और अफगानिस्तान पे और आईएस पे, तीनों पे. सो दिस इज अबाउट इट. ओके, सो गाइज आई थिंक we've had our class for today. Now I'm going to see you tomorrow at 7 a.m. sharp. Make sure you get up on time, come on time. Okay, I need to, देखो भैया मैं भी जल्दी उठ के क्लास ले रही हूँ, मुझे भी तो बूस्ट चाहिए. तो maximum number of people online, I'll get a boost to take the class early in the morning. Otherwise, I'm going to move on to 10 a.m. Okay, remember that. I'll see you tomorrow at 10, no, at 7 a.m. sharp. Bye, everyone. Bye, guys. Have a great day.